हेलो बिज गुरुकुल फैमिली, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के प्राइम ट्रेनिंग सेशन के अंदर। एंड आई नो आप सभी लोग बहुत ज्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रेनर भी आज सिखाएंगे, बहुत कुछ लर्न करेंगे। सो मेक श्योर कि आज नोट्स आप जरूर बनाएं और प्राइम ट्रेनिंग को लास्ट तक अटेंड करें। बहुत कुछ लर्न करने वाले हो। तो सबसे पहले जो आज हमारे गेस्ट हैं उनको इन्वाइट करने से पहले पहले आप लोगों से थोड़ा मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन ऐसा है जो अभी जस्ट बिज गुरुकुल के सिस्टम में रिसेंटली एनरोल हुआ है। टाइप मी इन दी चैट बॉक्स। फर्स्ट टाइम प्राइम ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, टाइप मी इन दी चैट बॉक्स। कौन कौन है? गौरी, आरुषि, अमीना, गुरप्रीत, गुलनाज, नेहा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, डन। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये चीज बताता हूँ कि प्राइम ट्रेनिंग बिज गुरुकुल का वो सेक्शन है जहां पर आप एडवांस लेवल की चीजें सीखेंगे। आई नो आप बिज गुरुकुल में या तो आप काफी टाइम हो गया होगा, आप चीजें लर्न कर रहे होंगे, कोर्सेज से नई चीज सीख रहे होंगे। तो प्राइम ट्रेनिंग वो एक सेक्शन है जहां पर आपको और एडवांस लेवल पे चीजें आप सीखोगे कि कैसे आप और ज्यादा कैसे ग्रो कर सकते हो इन योर फील्ड, इन योर नीश, इन योर करियर। तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कोई बताएगा कि आज का टॉपिक क्या है हमारा? एनीवन नोज क्या टॉपिक है हमारा आज का? बिल्कुल रेशम, आपने बिल्कुल सही कहा। एस योर क्वेश्चन, एस योर स्टाइल क्वेश्चन ऑन सोशल मीडिया। एवरीबडी नोज कि अगर सोशल मीडिया पे हम हैं, देखो जितने भी लोग यहाँ पर वो डिजिटल क्रिएटर्स हैं, और अगर वो डिजिटल क्रिएटर्स हैं दैट मीन्स कि उनको अपने सोशल मीडिया पे कैसे प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे अथॉरिटी बिल्ड करनी है, क्या प्रोज होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं, किन चीजों को ध्यान रखना होता है, वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी चीज को डिटेल में हम जानेंगे। और इसको सिखाने के लिए एक ऐसे पर्सन को होना बहुत जरूरी है जो इसी फील्ड में लोगों को ट्रेन करते हो। तो एक ऐसे गेस्ट हमारे बीच में प्रेजेंट हैं जो इसी फील्ड में बहुत सारे लोगों को, 100 प्रोफेशनल्स को कॉर्पोरेट्स में ट्रेन कर चुके हैं। ऑलरेडी मल्टीपल फर्म्स के साथ वो वर्क कर चुके हैं, और बहुत अच्छी स्पीकर भी हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर है, इमेज कंसल्टेंट है, और न जाने क्या क्या। आप लोगों ने ऑलरेडी प्रोफाइल देखा होगा, और आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने गेस्ट को किस तरीके से इन्वाइट करते हैं। टाइप क्लैप इन चैट बॉक्स एंड लेट अस इनवाइट टुडेस गेस्ट सुरभि कुमारी। सुरभि, मैं प्लीज चाहूंगा अपना कैमरा ओपन कर लीजिए एंड एनलाइटन अस फ्रॉम योर नॉलेज। हाय सुरभि, कैसे हो आप? हेलो हेलो एवरीवन। आई होप मैं ऑडिबल हूँ और मैं विजिबल भी हूँ। एकदम मेरे क्रिस्टल लिए क्लियर। बहुत बहुत नया है बिकॉज आई यूजुअली डू माई ट्रेनिंग्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, सो इट्स ओके, वेरी न्यू एंड आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट कि कहाँ से वीडियो आता है नॉट, बट आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल एंड माई प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो विजिबल। क्रिस्टल एंड क्लियर, इज बिल्कुल विजिबल है। इज माई और लोग आपके लिए क्लैप्स टाइप कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने ओह अपना थैंक बिजी यू। शेड्यूल में से टाइम निकाला एंड ये माई सेशन प्लेजर। पॉसिबल हो पाया। तो माई प्लेजर माई प्लेजर। या सबसे यस। पहले स्टार्ट करते हैं। मुझे एक्चुअली बहुत क्यूरियोसिटी रहती है एक पर्सनल स्टोरी की, क्योंकि मेरे पे जो थैंक यू। आता है ना वो आता है कि इस पर्सन ने ये अचीव किया है, उनका ये डेजिग्नेशन है, उन्होंने ये कर रखा है। बट लेकिन मुझे काफी क्यूरियोसिटी कि ये सब किया कैसे, क्योंकि असली एसेंस, जो असली नॉलेज, वो तो पास के हार्डवर्क के अंदर है कि कैसे ये चीज हुई, किस किस तरीके से करा। तो मैं जरूर चाहूंगा सुरभि, एक अपनी पर्सनल स्टोरी से आप जरूर स्टार्ट करें कि कैसे इस फील्ड के अंदर आना हुआ, कैसे आप ग्रो करें इस फील्ड के अंदर, और आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। या Absolutely, absolutely. So what happened is, as a little girl, I wanted to be the Miss Universe. ओके, और मुझे मिस इंडिया में जाना था, मिस इंडिया जीतना था, मिस यूनिवर्स बनना था. But as वाओ, I grew up, that dream started dying, and I thought that probably I will not be able to do it. But I still participated college के third year में, and I went till probably national top 50, but मैं Miss Universe तक नहीं पहुंच पाई. So then I gave up on everything and I did my MBA. I became an HR professional. So I was working as an HR professional in one of the top MNCs in India. ओके, फिर lockdown हुआ and then I realized that life में, as in when it comes to career, when it comes to a traditional career, when it comes to traditional income, it can go at any point of time. Although my job was not affected, but a lot of people around me really got started getting affected. And then I started remembering about what I'm the most passionate about. I started reading a lot of books, and because I had already been to a lot of modeling schools and I had been to a lot of seminars and finishing schools also. Already मैंने अपनी personality पे बहुत work किया था.
as growing up because मुझे pageants में जाना था. And I was working as a part-time model too. So I thought कि Miss Universe ये बन के मतलब जो एक ही काम लाइफ मैं का है कर ना ये सकती सारा, मतलब थी. ये जो आप बता रहे हो? हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी. So मैंने सोचा कि मिस यूनिवर्स का जैसे मैं जो करना चाहती थी बन हम्म. के, and I wanted to inspire people around me to follow their dreams. Why not today? Why not start it immediately? That's when I started my Instagram channel in May 2021, and I started sharing content related to जो भी मैंने सीखा था personality development का. And ever since I was 11 years old, I was on the stage. तो मैं बहुत बचपन से ही काफी पब्लिक स्पीकिंग, एंड आई एम आल्सो एन इंटरनेशनल लेवल पैनलिस्ट. I represented India in Oxford Brookes University. मैं So दोबारा I, पूछूंगा, ये एक ही yeah. लाइफ का है ना ये? Thank you so much. You are flattering me, seriously. थैंक यू सो मच. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बिकॉज आई रिमेम्बर जब मैंने रील डाला था तो बहुत लोगों ने मुझे अच्छे अच्छे हम्म. कमेंट्स किए कमेंट सेक्शन में जाके, एंड शेयर भी करी मेरी स्टोरीज, एंड आई फेल्ट सो गुड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी. सो इफ एनीबडी हु हैज शेयर्ड द कंटेंट और प्रोबब्ली शेयर द स्टोरीज, और जिन्होंने कमेंट में शेयर किया है, अगर वो कहाँ यहाँ पे हो तो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल. एंड थैंक यू सो मच. आई हैव रेड ऑल योर मैसेजेस, और मैंने कुछ कुछ नोट्स भी बनाए हैं जो आपके इंस्टाग्राम पे, मैंने सबके प्रोफाइल में गई और मैंने देखा कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन वर्क ऑन. सो वील टॉक अबाउट दैट. ओके, सो कमिंग बैक टू टॉपिक. So I started sharing content related to whatever I had learned, and then I started gaining traction, and a lot of image consultants and soft skills trainers, they started approaching me that why don't you get a professional certification, and why don't you start practicing it professionally. फिर मैंने हम्म. certification किया, and around August 2021 I had my first one-on-one client, and since then, like, the story started. So I have now gained almost across three different Instagram channels. I have three different ones, and I have 60,000 followers and counting. And I have been able to generate an income of 2 lakh rupees only from my consulting business, जिसका source सिर्फ Instagram है. Or another sum of I get paid as a paid creator for a lot of different creation platforms, like आजकल बहुत सारा सुना होगा आपने, MX Takata, Trell, हम्म. even your MX some sort of Snapchat spotlight also. So all of that has happened because of Instagram. And me being, and I feel that I was a commoner. I came from nowhere. Although I had the skills, I had a lot of flair in me कि मैं लोगों की already help कर पाऊँ, and it was my passion. But still, I had no idea how to do this. And फिर I was able to replace my full-time job income in the beginning of this particular year only. फिर मैंने job छोड़ दी, and now I'm able to live my purpose every day, just because of the way I have sort of presented myself on social media. So I'm very grateful, and I'm super excited to share this journey with all of you. डेफिनेटली. अच्छा, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा. आई नो आपने बहुत सारी चीजें करी हैं लाइफ के अंदर, एंड वो दिख भी रहा है. आपकी एनर्जी काफी ज्यादा है, ये मतलब मैंने ये नोटिस करा कि मतलब यू लॉट्स ऑफ एनर्जी, और एंड वो दिखता है कि वो जो पैशन दिखता है कि दैट यू आर परसिंग योर पैशन, जो आप करते हो वो उसमें एक होता है ना कि जम के लगना कि हाँ आई एम फीलिंग द पर्पस ऑफ माई लाइफ, वो दिखता है. और ऑब्वियसली जब आप किसी को हेल्प करते हो, जैसे अभी आपने बताया कि एक एक कमेंट आपने वो पढ़ा, आपने लोगों की प्रोफाइल देखी, तो ये भी दिखता है कि आप एक गिविंग एटीट्यूड पे दिखता है, लाइक कि हाँ सिखाना चाहते हो उस तरीके से. बहुत बढ़िया लगेगा. मुझे लग रहा है आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है. आई एम सीरियस सुपर डुपर एक्साइटेड. तो थोड़ा ना जो आज का टॉपिक है, मैं चाहूंगा जो हमारे ऑडियंस है उसको एक बार क्लियर हो जाए कि किस टॉपिक आज हम क्या लर्न करने वाले, और फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं Exactly. सेशन. या. All right. So basically, we are talking about how to establish a professional image on social media. आप agree करते होंगे कि सिर्फ social media पे एक प्रोफाइल होने से इसका मतलब ये नहीं है that you will be able to generate sales. A lot of you, I have been told, that are affiliate marketers. A lot of you are already digital creators, right? So you already know the importance of social media. So I'm not going to talk about that. Importance तो हम सबको पता है. But how to leverage that
जो हम क्रिएशन करें, हाउ डेफिनेटली। टू लेवरेज दैट इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ एज अ प्रोफेशनल, कि लोग आपके तरफ देखें और लोग आपको सिर्फ ये ना सोचे कि आप कुछ सेल कर रहे हो, लोग ये सोचे कि यू आर एन एडवाइजर, यू आर अ टीचर, you are a coach who is telling them to use this particular product or who is telling them to take this particular course. Because आजकल क्या होता है ना, people don't buy from salesmen, they buy from teachers, they buy from coaches, and they don't buy from people who are actually trying to sell them something. So basically हम try करेंगे that we learn how to establish an image कि लोग आपको ज्यादा seriously लें, आप जो बात बोल रहे हैं वो लोगों के लिए बाइबल बन जाए, और लोग ऐसे सोचे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल माई क्लाइंट्स आर देयर, मैं एक इमेज कंसल्टेंट हूँ, एंड मैं अपने क्लाइंट्स को जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उनको कोई हेयर केयर प्रोडक्ट बताती हूँ, स्किन केयर प्रोडक्ट बताती हूँ, एंड आई ऑब्वियसली आई एम जनरेटिंग अफिलिएट इनकम फ्रॉम दैट ऑल्सो। सो अब वो एक बाइबल समझ लेते हैं, अब वो कोई और प्रोडक्ट लेंगे ही नहीं, एंड दैट्स बिकॉज they believe that I have that capability in me to change their life and to make them a certain person. And how did that happen? That happened just because they saw a couple of videos on Instagram. There is nothing that convinced them more. So we're going to learn exactly how to do that, exactly how to come up and show up in order to, to do this and in order to establish an image like that. That's exactly what we want to learn. So let's start. We Lovely. can start, Surbhi, right? Yes. Is everybody ready? या मैं एक छोटा सा हम रिचुअल Okay. एक्चुअली फॉलो करते हैं जब भी हम सेशन स्टार्ट करते हैं, तो हम लिखवाते हैं चैट सेक्शन में प्लीज एवरीवन टाइप BIO, ब्रिंग इट ऑन। Oh, okay. Exciting. तो ऑडियंस की तरफ से Wow. हमें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, वी कैन स्टार्ट टुडेस सेशन। या Okay, lovely, lovely. Okay, so I have already, okay, I'm so sorry, I'm not able to, can you see my screen? Screen यस, दिख रहा स्क्रीन है? इज विजिबल, एक्चुअली स्क्रीन इज मैं विजिबल। या स्क्रीन पता नहीं, हाँ, got it, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि स्लाइड कैसे चेंज करें। Anyways, I'm so sorry, and let's get to it. Okay, so I have already talked about my story, ki how I started in May 2021, and I have 3 different Instagram channels, and how I generate income from various sources, and how I have basically leveraged social media to live my purpose every day. ये सब की बातें हमने already कर दी है, and I'm very grateful कि एक conversation के medium में से हो पाया। तो अब हम बात करेंगे exactly what we were up to and why do we need to actually build a professional presence on Instagram. एक तो मैंने जैसे कि बताया कि you will become a coach, you will become a teacher, and people always want to buy from somebody who is not selling. जैसे कि आप एक affiliate marketer हो, situation number 1, और आप एक product के बारे में बात कर रहे हो and you're giving the person a link and you're earning from that particular link. However, tomorrow if you become an influencer and then you talk about that particular product, that this product is good, people are more likely to buy the product in that case. So basically हमें ऐसा बनना है that we not only stay in the niche of what we are creating, but we become over and above as consultants, as teachers, and as trainers who can make your life or make the consumer's life a better place to live in. So basically बहुत सारे लोग आपके साथ business करना चाहेंगे if you are able to establish a professional image. क्योंकि for example अगर एक Instagram page है और उसका नाम है for example sapiosexual Amit, and the username is very unprofessional, और profile picture में भी उन्होंने ऐसे as in his rolled his eyes and he's posing like this, of course nobody will want to do business with them. People will think, and especially आप तो consumers को ले भी लो, but especially when it comes to B2B, when it comes to high value customers जो सबसे बड़ा आपसे order place करेंगे, those people will not want to work with you because they don't think that you take your job seriously. तो अगर आपको ऐसा दिखना है कि आप अपनी जॉब को सीरियसली लेते हो, then it is very important that we establish a social media presence. और दूसरी एक चीज है कि for example whatever your niche is, for example it is affiliate marketing or it is digital marketing, anything like that, अगर आप एक for example एक प्रोफेशनल इमेज बनाते हैं तो आप एक क्रॉस सेल भी कर सकते हैं, अपने डिफरेंट मीडियम्स में भी अपने आप को फोरे कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अ डिजिटल मार्केटिंग पर्सन
can also be a digital marketing teacher, can also sell digital marketing products, can also help people build their digital marketing or digital presence, can also start a consulting firm for digital marketing. For example, as an image consultant, I also have a product line which is in making. So मेरा खुद का स्किन केयर और मेकअप लाइन भी है, because my customers will buy the consulting service from just once from me, but they will always come back to me for skincare and makeup, right? Another thing is ki I also have a team of makeup artists and dermatologists. So whoever, for example, my customers who come to me are also I'm also giving services of makeup artists and dermatologists, and I'm making commission. तो आप बहुत सारे different fields में अपने आप को foray कर सकते हो, और बहुत सारे लोग आपसे team up करके excited होंगे आपके साथ work करने के लिए, just because you have such a good presence on social media, and just because people see you as a person who they will want to work with. जैसे कि हम सब अभी बहुत young है, as in I'm sure जैसे मुझे बताया गया था 18, 17, 18, 19, even 20-year-old, and we are at a phase of life जबकि हम अपने career की almost शुरुआत कर रहे हैं. And I'm very proud of you all कि आप सब बिज़गुरुकुल में है, आप लोगों ने enroll किया है, and you're using this time to learn and become better, क्योंकि आजकल college education is, it's really not preparing you for life. So I'm very happy that you have taken up this step to actually prepare yourself for the future. So क्योंकि हम अपना career बना रहे हैं, क्योंकि हम अपना personal brand बना रहे हैं, it makes more sense for us to make it in such a way that people who come after us, for example, our siblings, for example, our friends, for example, whoever is around us, they start looking up to us. They start getting inspired by our journey. At the end of the day, we all want to do that, because making money is not the only thing that we want to do from Instagram or from social media or from whatever we are doing. At the end of the day, we want to be remembered. We want to be, look, ऐसा बनना चाहते हैं कि सब आप पे look up करें and सब बोले कि, you are somebody who we really love to look up to and you inspired us. So professional presence बनाने से ये सब कुछ possible. So without further ado, let's start with how exactly और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा to build a personal professional presence. Okay, मेरी हिंदी थोड़ी सी फॉल्टी है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे और आगे बढ़ेंगे. ओके, सो 3 पिलर्स है हमारे प्रोफेशनल प्रेजेंस के, और क्योंकि मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ, शायद मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से देखना है, तो मैं ये जानना चाहूँ सुरभि आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपका वीडियो स्टक हो गया एक्चुअली. क्या आप लोग मुझे फॉलो कर पा रहे हैं? जस्ट राइट यस इन द चैट बॉक्स. हाँ जी, हाँ जी. तो मैं एक्चुअली वॉइस आपका बीच में ब्रेक हो गया था. ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकंड, आई हैव थोड़ा सा चेंज इन नेटवर्क. ओके ओके, जस्ट अ सेकंड. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं एज इन. हाँ जी, हाँ जी. और जो भी कन्वर्सेशन है हम ना चैट सेक्शन में कर सकते हैं, क्योंकि वेबिनार मोड में तो कोई वीडियो ओपन नहीं कर सकता आपकी, बट हाँ लेकिन हाँ, चैट आप सेक्शन में चैट बात में कर सकते लिखिए, चैट में लिखिए कि आई कैन फॉलो, या फिर आई एम एबल टू हियर, और जो भी. Presentation, okay, lovely. Thank you so much, Robin. Really means a lot. Thank you, Khushi. प्रेजेंटेशन आ रहा है ना? ओके, लवली लवली. ओके, तो 3 पिलर्स है बे मैक्सिमम जो हमें अपना प्रोफेशनल प्रेजेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दीज 3 पिलर्स आर लुक, फील एंड वैल्यू. लुक ऑफ योर प्रोफाइल, what people can see, how people feel when they see your content, and the value that people derive from your content. Okay, so look of your profile would mean basically your profile picture, आपका username, आपका bio,
your website or storefront, अगर for example Amazon storefront है for example, और LinkedIn website है, तो वो कैसी दिखती है, आपका प्रोफाइल पिक्चर कैसा दिखता है, एंड बेसिकली आपका यूजर नेम प्रोफेशनल है कि नहीं, एंड बेसिकली द कंटेंट यू शेयर उसमें किस तरीके की ब्रांडिंग आप यूज करते हैं, that is your look. For example, Bizgurukul has a orange branding use करते हैं, and orange is a color that denotes trust and friendship. So because Bizgurukul is trying to position itself as a brand which is a friend and which can hold your hand and make you succeed, तो उन्होंने अपनी branding को orange रखा है, which is such a good thing. तो आप क्या चाहते हैं अपनी प्रोफाइल से कम्युनिकेट करना, आप एक प्रोफेशनल की तरह दिखना चाहते हैं, तो आपका प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर कैसा होना चाहिए, आपका यूजर नेम कैसा होना चाहिए, आपके ब्रांड कलर्स कौन कौन से होने चाहिए. वील टॉक अबाउट कौन कौन से ब्रांड कलर्स का मीनिंग क्या होता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. सो बेसिकली लुक एंड देन द फील ऑफ द प्रोफाइल, जिस तरीके का आप लैंग्वेज यूज करते हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं या आप मरियल रहते हैं नेगेटिव, एंड whether you have energy or enthusiasm behind what you want to do. So एक चीज है, if I was not energetic and if I was not enthusiastic and if I was just doing the training like this, honestly tell me how many of you will follow. People, you will not even be interested in what I have to say. So energy makes a lot of difference. Your body language, your smile, your eye contact makes a lot of difference in not only the things you do normal life में नहीं, आपके content में भी. Okay, and the last thing is the value which people are deriving from your content. So we have to start thinking कि for example हमारा Instagram account है, so will we follow ourselves on Instagram or not? हम क्योंकि बहुत सोचते हैं who do we follow, and we sort of are very choosy about who do we follow, and because Instagram में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भी है, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी. सो people are very choosy about what they want to follow. So they have to see कि आपके content में value है, they have to see that your content is positive, they have to see all of this thing, आपका consistent value creation in order to be associated with you. So let us discuss the whole look thing in detail. Okay, so how do I want your profile picture to look like? It has to be straight to camera shot. So straight to camera shot क्या होता है, इस तरीके का shot, जैसे कि अभी आपको जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है आपका straight to camera shot. Examples which should not be there are this. Okay, we are not caddies, we are professionals. So straight to camera shot, not like कि बहुत low angle से लिया है, बहुत up angle से लिया है, face अच्छे से दिखना चाहिए. Because क्या होता है, face builds trust. When you can see someone, then people will trust you. क्योंकि आप business कर रहे हैं, then it is very essential that you are sort of showing your face and you are showing your smile. Smile से क्या होता है, friendly लगते हो आप ज़्यादा. So when you have a profile picture like this, compared to a profile picture like this, okay, it will make a lot of difference and it will make you look more friendly. You have to have eye contact. Suppose you're looking here. So of course, it does not build trust. अगर आपसे कोई बात भी कर रहा है normal life में और आपसे इधर उधर देख के बात कर रहा है, you will think that that person is lying. That person is not honest. So it's very important that हम ये छोटे छोटे जो psychological cues है, जो हमें लगता है, बहुत लोगों को लगता है that they don't matter, they matter a lot. So our profile picture is the very first thing. भले ही वो Facebook, Instagram and all of these things, very important that we sort of have a nice neutral background या आपका एक niche based background. Neutral background क्या होता है? Any background with neutral colors जैसे कि grey, brown, beige, ठीक है, navy, black, ये सारे colors neutral होते हैं. इससे क्या होता है कि इंसान की आंखें जो भी देखता होता है, that comes on the person and not on the background. So it can be a neutral background or it can be a niche based background. For example, you are trying to create travel content. So अगर आपके पीछे Eiffel Tower है, so of course that makes sense. So if you are trying to, or
suppose आपका branding, जैसे Bizgurukul का branding is orange color, so they can have an orange background. That is something else. Okay, but most probably, if you are trying to, have a profile picture that works for all occasions, I will suggest कि आप एक photographer से या फिर एक बहुत अच्छे कैमरे से एक sort of picture click कराएं, जो कि आप बहुत यूज करेंगे in future. It will be used for not just your profile pictures across mediums, or needless to say, it has to be the same. Instagram, Facebook, LinkedIn, it has to be the same, because people, once they see you and your smile, they should be like, oh, this is the person I saw on social media, on Instagram. Oh, this person I saw on LinkedIn, he's so amazing, or she's so amazing, she creates amazing content. Okay, so get this clicked from a photographer, or for example, like a nicely professionally clicked, and use it for your social media. Another thing is color theory. So जब हम रेड कोई भी आउटफिट पहनते हैं, तो उससे अटेंशन ग्रैब होता है. So whenever you sort of wear red, or whenever you sort of click a picture in red color, तो लोगों की नजर अपने आप आपके प्रोफाइल पे जाएगी. तो जब पीपल यू में नो में सजेशन आता है, पीपल यू में लाइक टू फॉलो में सजेशन आते हैं, तो अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर में रेड हो, एंड इनफैक्ट वन पर्सन हु मैसेज मी has a profile picture in red outfit, so that is very very nice. Whoever is that, it's very very nice. You should have, or you should prefer to have it in red outfits, क्योंकि वो उस attention grabbing है, और लोगों की आंखें आएंगी आपके ऊपर, and people will follow you more. Another thing is, then blue is another color which makes you look trustworthy. जैसे कि red is Tinder wants to grab your attention. Red is Zomato. जो भी चीजें सेंसेशनल होती हैं, जैसे कि टिंडर, जैसे कि जोमैटो, जैसे कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो रेड से अपने लोगों का अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं. ब्लू इज फेसबुक, ब्लू इज ट्विटर, and these people are social media websites. They want to be somebody who you trust. So newspapers के branding usually blue होती है. Okay, Hindustan Times is blue branding. Why? Because they want you to trust them. So if you want to be a person who wants to be trusted in business, तो आप blue कर सकते हो अपना branding. आप blue outfit में फोटो खिंचा सकते हो, और अपने brand colors को भी blue use कर सकते हो. जैसे कि आपको एरोसेल पे पोस्ट डाल रहे हो, तो उसमें ब्लू कलर डाल सकते हो. Another thing is, white is something that will make you look innocent. अगर ऐसा है, मतलब और orange, जैसे कि मैंने बताया, friendly. Orange is Bizgurukul. Orange is Swiggy also, and they want to be trustworthy. White is again, it's very, I will not suggest white, because although कि थोड़ा trustworthy होता है, but it will always tone you down. मतलब ऐसा नहीं है कि your profile is going to stand out. So you want to stand out in today's competitive environment. But still, if you like that color, go for it. And white and black combination जो होता है, आपने देखा होगा कि जो leaders of the world है, जैसे कि Barack Obama, your even for example your जितने भी लीडर्स है, पॉलिटिशियंस है, डिबेट में वो हमेशा ब्लैक, व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन पहनते हैं. That's why red is something which is attention grabbing, and black and white combination means powerful. So if you want your profile picture, or if you want to be looked as a powerful person on Instagram or in life, then you can have a black and white sort of branding, or black outfits पहन सकते हो आप. Okay, so it's up to you how you want to be looked as you want to be friendly, or you want to be powerful, or you want to be somebody who's trustworthy. Okay, then you have to definitely avoid any type of blurry or sensual kind of expressions, negative emotions on your face. Irritate हो रहे हो, impatient हो रहे हो, negative emotions. I know some girls do that, and they have a lot of following, and they have all sorts of emotions, but following does not really convert to business. And they can be probably sensational figures, but they will never be able to establish a multi-million-dollar business, which we want to, right? So it's very important that we come across as a very positive person on social media, even if we are not in reality. Okay, so very important to avoid any type of light colors.
लाइट कलर्स से क्या होता है कि आप यू ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट लुकिंग डल एंड यू लुक लाइक आप में कोई एज इन कोई बात नहीं है, पावरफुल नहीं हो आप. जैसे कि येलो, yellow is a color which is very dull, which makes you look sick, and light yellow, not the dark bright yellow, light yellow. And even your beige, lavender, olive, आप ये सब पहनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि you want to blend in the crowd. On days when you want to blend in, you can wear these colors, but not on the days where you want to stand out, right? Okay, and one more thing, and I have noticed this and it irritates me a lot. A lot of people I have seen wear sunglasses while talking. So एक तो ये एक बहुत बड़ा etiquette mistake है in real life also. While talking, you cannot wear sunglasses. Eye contact is mandatory. But in otherwise also, in real life also, आपके प्रोफाइल पिक्चर में सनग्लासेस बिल्कुल भी नहीं हो सकते. आपके रील में जब आप बात कर रहे हो, यू कैन नॉट हैव सनग्लासेस, क्योंकि आंखों से ज्यादा बातें होती हैं. Normally when we talk, we communicate a lot through our eyes and we communicate a lot through our expressions, which is invisible in a sunglass. So no sunglasses while talking, no sunglasses in profile picture, no sunglasses wheresoever on social media. Social media आपको इंस्टाग्राम में अपने स्क्रीन पे देख के धूप नहीं आ रही होती है, सो वी विल नॉट नीड धूप से प्रोटेक्ट करने वाले ग्लासेस. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ योर प्रोफाइल पिक्चर should look like. Let's have a look at a very good example of a profile picture. अगर आप अच्छे से नहीं देख पा रहे, so you can just zoom and just have a look at how the profile picture is looking like. So this lady, she has a white, okay, she is blending in, she is a bakery person. So us basically personality wise, she doesn't want to stand out because she has a bakery and she wants her bakery to be standing out, right? So very interestingly, she has used her own picture in profile picture rather than putting a cake ka picture. And the reason is people connect with people. आप अगर आपका फॉर एग्जाम्पल मोटरसाइकिल भी बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ सॉर्ट ऑफ अ वेरी डिफरेंट ऑफ अ कैंडल्स बिजनेस ऑल्सो, sometimes when there is a person behind making that candle and is talking about that business will always sell more, क्योंकि personal brand और personal value होती है, एक relatability factor होता है, right? So she has very nicely used, it's a straight to camera picture, and she's smiling also. So इस तरीके का profile picture होना चाहिए. Very important that we have good lighting. Good lighting is the key हर एक time पे. मतलब it's not just your profile picture, but otherwise also any content that you shoot, any type of training that probably जैसे मैं अभी train कर रही हूँ, there is a lot of light, so this is not my face का glow, I'm sure that you are aware. This is the light that is coming on my face because I'm using a ring light and a camera. So very important that we have good lighting. If I switch off the lighting, let's take an example. I'm not going to look as good and as powerful, and I'm not going to look convincing. So it's a 100% level ka difference when it comes to lighting. Okay, let's move forward. All right, usernames. So हमें अपना username. So username is the first thing that people see, because आपका whenever you have Instagram shows a list of people you may know, people you may like to follow. So वो हमेशा username दिखाते हैं. तो अगर आपका username बहुत immature हुआ, तो it will look very bad. So for example, suppose अब webinar आ रहा है. For example, if my webinar was coming, and my name, instead of being my name and surname, would have been sapiosexual Surbhi, it wouldn't have been that professional and you wouldn't have been so interested. In fact, Bizgurukul to मुझे select ही नहीं करते for prime training, and they wouldn't even sort of bring me on board, because prime is very important for Bizgurukul again, and they have the best kind of trainers and they have the best students on prime, right? So they will never choose or associate with someone who has a very immature surname or a username like sapiosexual Amit, like Potterhead. ये क्या username है, right?
we are trying to do business. This is not a professional personal profile. Okay, your username should be your first name. So for example, जैसे जो नीचे profile में name आता है, for example, this is the username and this is the name that I'm talking about right now. Okay, this name should be your first name only. तो जब ये first name आता है, I know she has written full your first name, the last name also. But जब first name आता है तो वो ज़्यादा relatable लगता है. For example, Surbhi. For example, if she had written Sarah and एक वो देके slash देके Brahma Bakery, it would be more relatable. It would be just more थोड़ा सा casual, but at the same time formal. So it will be sweet. So जब भी हम किसी को first name से बुलाते हैं, so it is like more endearing. It is more personal. So it builds some type of like a professional, it brings some type of personal intimacy with the other person. So your name should be there and फिर slash करके जो आपका purpose और vocation है. जैसे कि for my Instagram, it is Surbhi / image makeover and soft skills coach. Okay, so what happens is when somebody tries to search you on Instagram or social media, or आजकल तो Gen Z, I'm sure half of you or most of you are from Gen Z, and आजकल तो हम Instagram पे Google से भी पहले सर्च कर लेते हैं आधी चीजें, right? So Instagram पे सर्च करेंगे जब कोई search skills coach, तो मेरा नाम आएगा. And yours can also be Amit, best Amazon finds. So this is like a good name for affiliate marketing. Or for example, Sheena, fashion and travel. Okay, or some person and sort of Amazon bestsellers, something like that, quirky and very nice. Okay, avoid any type of calligraphy. जैसे बहुत लोग अपने यूजर नेम और बायो के टाइम पे अलग अलग तरीके का कैलीग्राफी डालते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में चीजें डालते हैं, पर्शियन, पोर्चुगीज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ लैंग्वेज. एंड व्हाट हैपेंस इज दैट पर्सन जो आपको people have very less attention spans, 3 से 5 सेकंड maximum, and if they are not able to read what is there on your bio, why will they make a purchase from you, or why will they actually follow you, right? So it should be as simple as possible. जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल पे देखा, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से लिखा है, कोई ज्यादा फॉन्ट यूज नहीं किया है, कोई ज्यादा बोल्ड नहीं किया है. योर नेम इज ऑलरेडी इन बोल्ड, सो व्हाई डू यू नीड टू? सो वी हैव केप्ट इट short and simple, right? So let's see some more some more sort of examination बोल रही हूँ, examples. Okay, so Instagram expert, and it's like a nice pointers के तरीके से इन्होंने डाला है. They have not used any kind of calligraphy, not used any sort of language, so it is looking very professional. Not only is it going to rank high in SEO, but also going to look very professional. So if anybody is trying to approach Jen Herman as an Instagram expert, Jen Herman, if she says, I charge 50,000 rupees per session, that person will not think twice to give 50,000. If Sapio section Amit is charging 50,000 rupees for one session, people were like, no, this person is not real. Okay. So bio again, crisp and clear in one language only. And another thing that happens, languages are different लिखते हो. तो जब Instagram पे होता है ना use translation, see translation, उसमें कुछ और ही translate करके बता देते हैं, because obviously the language का connotation is different and English में उसका अलग ही मतलब है. बहुत लोग हिंदी में लिखते हैं and हिंदी में उसका अलग ही मतलब होता है. English में because of artificial intelligence, it's some different meaning altogether. So we have to avoid that as well. Then we have to avoid any kind of sassy sentences. Sassy sentences means किसी भी तरीके का मतलब over smartness, किसी भी तरीके का, if you're trying to build something down, okay, or I don't even want to say that. मुझे पता है, आप लोगों को भी पता है what I'm talking about. Any kind of sentence which is degrading, or जिसमें थोड़ा over smartness दिखा रहा है, or जिसमें basically you're trying to bring anybody down. That is something which is not supposed to be there. We have to kiss
basically keep it short and simple. And we have to add emojis से बहुत अच्छा लगता है, बहुत readable बन जाता है. So for example, if somebody is trying to, somebody cannot understand कि क्या है investment, so if this graph is there, so sort of it becomes more readable. And contact details are a must एक professional Instagram या कोई भी social media में, क्योंकि अगर आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं रहेंगे तो लोग सोचेंगे दिस पर्सन इज जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम, ओके, एंड दिस पर्सन विल नॉट एक्चुअली डू एनीथिंग. एंड कीवर्ड्स इंस्टेड ऑफ सेंटेंसेस, आई थिंक ये सब ऑलरेडी आप लोगों को बहुत हद तक पता है, बिकॉज आई हैव सीन अ कपल ऑफ इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स in which this is already there. So I really appreciate it, and congratulations to you if this is already something you're following. However, I did see a couple of Instagrams which were not like this. So ab hum probably will, after this training, we will just quickly go to edit profile and do all these changes. और दूसरी चीज है कि even if I have seen a couple of profiles कि आपने सब कुछ perfect किया है, but again it is the feel of your content which is probably not very professional. So let's have a look at what exactly does it mean. उसके पहले थोड़ा सा वेबसाइट स्टोरफ्रंट की बात कर लेते हैं. So your वेबसाइट, और जो आप जैसे कि अगर स्टोर फ्रंट बना रहे हो Amazon का, तो दैट इज डिफरेंट. अगेन जो फॉन्ट उसमें यूज करते हो, फिर अगर आप एडिट कर सकते हो अपना रिंग हिस्ट्री, अपना आप स्टोर फ्रंट कोई भी वेबसाइट एडिट कर सकते हो, तो उसको आप रीडेबल बनाओ और उसमें भी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग डालो. सो पर्सनल ब्रांडिंग, जैसे कि कलर्स की बात कर रहे थे हम, जैसे फॉर एग्जांपल वी टॉक्ड अबाउट Bizgurukul's colors being orange, so they try to put orange in every post, right? So you are also supposed to have a personal branding color. I told you what the colors mean. So उस तरीके से आप अपने स्टोर फ्रंट का कलर्स चेंज कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट इट इज वेरी इजी टू रीड. आप बस टाइम्स न्यू रोमन या कैलिब्री टाइप का जो एज इन फॉन्ट है वो यूज कर रहे हो, so that it is just very simple and very easy for the other person to read. It's attractive, and video content is a must. ओके, सो वीडियो कंटेंट में लोग ज्यादा इंगेज करते हैं, लोग ज्यादा रहते हैं और लोगों को ज्यादा इंटरेक्ट होता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी अपना कैमरा ऑफ कर दूं और आपसे बात करने लगूं, यू विल नॉट लिसन टू मोर देन 5 sentences. सो आई नो और थोड़ा आपको मुश्किल होगा to listen the same thing, to listen to the same thing. So basically, why is YouTube more popular than Audible? The reason is that it has video content, right? So and of course it is older, so we'll not talk about that. We'll not go to that battle. Okay, so the content you share, content आप लोग सब I'm sure you try your best because you know the importance of video already. I'm sure that you share a lot of content and you try to leverage the content to make your social media better. But एक प्रोफेशनल तरीके से उसको कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी ग्रूमिंग है वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, एंड it's not just my training. If you go and see any video that I've posted in the past, you will not see bad grooming in any of the videos. Okay, because क्या होता है ना, grooming से आप जिस तरीके से दिखते हैं, people make a lot of assumptions about you. So Oxford University की एक स्टडी में बताया गया है कि लोग फर्स्ट इंप्रेशंस के लिए सिर्फ 7 सेकेंड्स लगाते हैं, 7 सेकेंड, और उन 7 सेकेंड में वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे या नहीं, वो आपको हायर करना चाहेंगे या नहीं, या वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहेंगे कि नहीं. तो हमें वो 7 सेकेंड को तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बनाना है, राइट? सो उस 7 सेकेंड में क्या क्या चीजें दिखती हैं? योर ग्रूमिंग शोज, योर बॉडी लैंग्वेज शोज, your smile shows, things like these, जो हम बात करे बिना ही एक इंप्रेशन दूसरों के ऊपर छोड़ते हैं इन रियल एज वेल एज रियल लाइफ. तो आपका ग्रूमिंग हर समय अच्छा होना चाहिए. अगर आप प्रोफेशनल ग्रूमिंग नहीं करोगे, जैसे कि आपके एक मास्टर ट्रेनर है, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, बट ही इज द, आई थिंक ही इज द CMO of Bizgurukul.
Yeah, so I'm sure that आप लोग बहुत सारी ट्रेनिंग उनसे करते होंगे. So I was really impressed by his grooming. He is always clean shaven, and he has this amazing like glasses painting. Glasses actually are very sort of something that really make you look more professional. So अगर आप अपने वीडियोस में और प्रोफेशनल दिखना चाहते हैं तो ग्लासेस पहन लीजिए. So not sunglasses, like the normal eyeglasses जो वो पहनते. So his grooming, he's always dressed in formal, so you will never see him wearing sort of something which is torn, something which is ripped, or not clean shaven, or jaise taise. He will never be not groomed. Even the person who was introducing me, he I mean everybody who I have met via Bizgurukul is very well groomed, and who shows up on videos. So grooming is not just important आपके real life के लिए, तो मैंने जैसे बता दिया कि because of the whole impression thing, but ऐसे normal life में भी अगर आप अपनी grooming को ठीक रखें तो बहुत as in आपके ऊपर और opportunities आएंगे. So grooming is very important. Clean shaven, eyebrows as properly done. I'm not saying कि एकदम it should be properly threaded, but at least it should be properly done. It should not become an sort of a distraction on your face. And basically जितना neat दिखोगे, जितना hygienic दिखोगे, उतना trustworthy लगोगे. It's a study that has shown that. Another thing is your clothing. So your clothing should be neat and well ironed, never ripped. And जैसे कि अब different चीजें में होती है. For example, आप consulting का business चला रहे हो, so of course you have to wear proper formals. As probably as an affiliate marketer, as a person who is selling a product, तो आपको थोड़ा और फ्रेंडली तरीके से थोड़ा सेमी फॉर्मल में ड्रेसअप होना होगा. फॉर एग्जाम्पल लाइक अ कैजुअल शर्ट और अ पोलो टी शर्ट. सो डिफरेंट फॉर्मेलिटी के हिसाब से आपको डिफरेंट तरीके के कपड़े पहनने पड़ेंगे, बट नेवर wear something which is too revealing, or something which is like either say ripped or torn or anything like that, because that's not how we like to present ourselves, right? And your body language should always be straight posture. Imagine I joined the presentation like this. Just imagine, would you even listen to me for just 1 second? You wouldn't. And all the changes that is probably coming is because of the way I've straightened my posture, or because of the way I'm smiling, or because I'm making eye contact. तो आप समझ सकते हैं अगर एक ट्रेनिंग में इतना इम्पोर्टेंट है तो वीडियो क्रिएशन में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा. आपकी एनर्जी जो है वो सामने वाले पे ट्रांसफर हो जाती है. When you talk to a happy person, you will become happy. So we want to make people happy, because people will always buy from you if you make them feel good about themselves, right? Okay, moving forward. Facing the camera, अब किस तरीके से हम कंटेंट बनाए. अब बहुत लोगों को और मुझे भी पर्सनली पहले बहुत रील्स को, जब रील नई नई आई थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था रील्स के ऊपर. मैं सोचती थी कि ये क्या चीज ला दिया, इंस्टाग्राम भी टिकटॉक बन गया है. पहले तो टिकटॉक भी हुआ करता था जब रील्स इनिशियली आया था मार्केट में. तो मैं सोचती क्या टिकटॉक ही बना दिया, टिकटॉक ही आ जाएगा, सब कुछ टिकटॉक बन जाएगा. और मैं बहुत कोसती थी इस बात को. बट इवेंचुअली आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट इट इज डू और डाई सिचुएशन. अब अगर हम वीडियो ना बनाए, अगर हम शो अप ना करें, तो इंस्टाग्राम तो हमारा पोस्ट तो किसी को दिखाएगा नहीं, राइट? बिकॉज पोस्ट यूज टू गेट लाइक फॉर एग्जाम्पल 100 likes a day, so video will reach at least 2 to 3,000 people. So I decided कि चलो आप कंटेंट क्रिएशन में वीडियो क्रिएशन करेंगे. So I was very nervous initially, और हम सब नर्वस होते हैं. Nobody is born like with the camera. अब तो थोड़े Gen Z आ भी रहे हैं, but जब मैं छोटी थी तब तो फोन भी नहीं हुआ करते थे. And कोई भी मतलब मुझे आज तक भी as in when I go to places I don't remember कि okay I should click a selfie to celebrate this, or I should do this or anything like that. So आप कैसे start करेंगे? First of all you have to think, and आपको दूसरे जो भी आपके नीश में दूसरे लोग हैं उनसे जाके आप आइडियाज लीजिए. उनसे जाके आप देखिए कि जो आपका टारगेट ऑडियंस है उनको क्या चाहिए. तो उसके बाद फिर आप आइडियाज लिया. 5 आइडियाज लिए आपने. उसके बाद यू डोंट पोस्ट बट यू शूट.
You start shooting content. You start to shooting on Instagram, real camera, normal camera. Normal आप shoot करो. And very important, as I said, that you should have a tripod and ring light, because lighting किसी भी चीज को better बना देती है, right? So very important. तो आप tripod और ये लग के आप practice करो. You shoot 1 day, 2 days, 3 days. You will not like your content. Maybe 10वां content you will like, and you will find कि चलो ये ठीक ठाक है, इसको post कर देते हैं. उसके बाद when you start receiving some sort of feedback, or when even if 5 people are liking that video, you'll see that, oh, इतना भी difficult नहीं था, and you start doing it. तो जैसे हम बोलते हैं ना कि you get out of your comfort zone, you take the first step. जैसे कि journey of 1,000 miles begin with a single step. तो आपको बस एक step लेना है. You have to, first step is to, to work on your grooming. Because, very important. If you are not well groomed, then, you're going to regret it later. जब आपके videos थोड़े से views आने लगे ना, because people will not convert into sales because of the way you look. Because it's hard and fast rule. I know बहुत लोग बोलते हैं कि अब Mark Zuckerberg इतना simply dress करता है, so why does he have so many people following him, and why is he so successful? तो हम सब Mark Zuckerberg जितने level के genius नहीं हैं, और हमें कुछ extra करना पड़ेगा in order to become, or in order to compete with people like that with so much of IQ and so much of mind. हम Bill Gates नहीं है. Even if Bill Gates is just coming, or Steve Jobs is coming in a turtleneck sweater and jeans, although that is also very smart. ऐसे देखा जाए तो Steve Jobs की भी grooming is very good. Elon Musk की भी grooming is very good. Although the clothes they wear are not very nice, but at least, the other things that they have, the IQ, the intelligence, the vision is extraordinary. So we have to reach that position. So we have to do a little extra. So maybe if we invest a little bit on our grooming, if we invest a little bit on the clothes that we wear, probably get some formals, 2 to 3 nice shirts, or one blazer, and even like the scarf I'm wearing, the scarf for ladies, and probably tie for men. आप एक formal occasion के लिए कुछ videos में आप थोड़ा आप casual लग लो, for example polo t-shirt, but some videos you act a little formal. So again, it's a game of how you want to interact with your audience. So practice करो and shoot and upload basically. And very important, बहुत सारे रील्स में आपने सुना होगा, जैसे बहुत लोग, मैक्सिमम लोग आजकल ईयरफोन लगा के अपना इंस्टाग्राम चेक करते हैं. सो जो भी आपकी आवाज होगी वो उनके डायरेक्ट कान में जाएगी. सो इफ देयर इज एनी बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस, people will skip over your video. They will not even think twice, because the voice is not clear, and they are sort of getting disturbed over here. So we don't want to do that. We want to use a proper microphone, or probably earphones, in order to shoot videos without any background noise. And we also want to make sure that we don't stand very close to the camera. See how it is, how unprofessional it's looking. We don't have to do this. We have to put a proper distance from the camera and speak, or sort of practice, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि how is it working on us. Another tip that I would like to give you is आप खड़े होके videos बनाइए. When you stand and make videos, you look like you're more present. When you sit, you feel more casual and relaxed. Remember हमारा एक स्कूल में हुआ करता था सावधान विश्राम, and how सावधान में how you used to stand. If you stand like this and make videos, maybe you don't do this, up thoda relax, but it will show up as something very like you are energetic in your videos. So wo chahiye hame, and try and stand, and that is why you need a tripod for recording. Okay, so get a proper tripod and a stand. Digitech products are the best in terms of like shooting. For my personal favorite, agar aapka koi affiliate brand hai, so please get that. I really like Digitech, and even the small जो छोटा वाला tripod होता है जो बहुत movable होता है, वो भी it's very useful, especially when you're traveling somewhere. तो
तो आप उसको आराम से अपने बैग में लेके जा सकते हो, बिकॉज you don't want to shoot at one particular location every time. आपको change करना है अपना background so that people start keep being interested, right? And coming back to background also needs to be neutral. I'm not saying that it needs to be perfect from day one, because I'm always somebody who believes in your constant efforts rather than perfection. अगर आपको लगता है कि आप perfect नहीं हो, it's okay. But अगर आप अपने ऊपर आज work करके you start showing up from tomorrow, you are a winner for me, even if you're not perfect. Okay. So this is like a very good example of a reel that is going to sell. Reason being that आप ये देख रहे हो जो eyes है इसकी, the eyes of the lady are in the middle of the whole thing. So they are, मतलब जिस पोजीशन में है, जब आप कोई भी वीडियो देखते हो तो आपकी आंखें इस पोजीशन पे और इस पर्टिकुलर पोर्शन पे आती हैं. So आपको स्ट्रेटेजिकली ये करना है that आपकी जो यूजर की आंखें जहां आएंगी वहां पे आप अपनी आंखें रखो, because that is what is going to create a lot of trustworthiness, right? So this is the portion where your eyes should technically be like. Okay, so this is a perfect camera placement example. However, there is one mistake in this video, and I would like anybody who can find out a mistake, let me know in the sort of chat box कि वो mistake क्या है जो हमने अभी तक डिस्कस किया, उन सब में से क्या मिस्टेक है. Yes, Meghna, very good, very good. Clap for Meghna. It is the sitting position. It's the sitting posture. Very, very good. I'm very proud of you. I was thinking कि probably आप grooming बोलोगे, but very nice. I'm very proud of you. It's the sitting posture which is wrong. She's looking very sort of casual, and she is not looking as somebody who is. But वो क्या हो रहा है ना कि when you do something, जैसे कि for example in traditional houses ऐसा होता था, जब गाय से दूध निकालते थे तो गाय लात मारती थी, and that used to be okay. So she is not having a good sitting posture, but she is having such a nice smile and eye contact that sitting posture is okay. So even if you have, like, there are 10 things in the box and you're ticking off 7 things, 3 things still okay, right? And 3 things are something because हम सब एक work in progress होते हैं. So 3 things we will eventually work on. Another thing is the text placement. So जब हम very important that we make sure, और ये तो आपको थोड़ा practice और training अपने आप से पता चलेगा, ये it's not rocket science, but it's not also something that has come to you in the first day itself. You have to make sure that the sort of text is not coming captions के नीचे ना, ऐसे caption जो भी आता है, and आपका यूजर नेम आता है, फॉलो आता है, तो उसमें ओवरलैप नहीं होना चाहिए. But anyways, this is a very good camera placement. Moving forward, okay, feel. I already said, talked about a couple of points in this one. कि people buy into the feel. लोगों को एनर्जी और वाइब से बहुत ज्यादा, वो बोलते हैं ना कि आजकल बहुत ज्यादा एक बहुत कोट, एक बहुत फेमस हो गया है, माय वाइब इज माय ट्राइब, योर वाइब, माय वाइब डिसाइड्स माय ट्राइब, ऐसा कुछ. So it's very true. Actually, people get attracted to people with high energy. जो ज्यादा, as in I'm not even saying extroverted people. I'm saying people who are very high on life. People don't want to be with people who are sad, who are always complaining, who are cribbing. So try आपका जो general normal energy है उससे ज्यादा energetic videos बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे होगा that people will think that, oh, this person is so happy, so I also want to be happy, so I'll associate with this person or probably buy the product that this person is buying. Okay, so even when it comes to sales pitches, जब आप sales pitching कर रहे हो, be it talking about a product on social media or be it talking about your business to a prospective customer, B2B customer, तब आपको sales pitching करनी होगी. That sales pitching always
It does not have to be, okay, this product has this is its features and I want you to purchase this product, it's very nice, guys, try this product, it's amazing. Compared to, guys, I'm so excited, I am so excited about this product, and this product has so many benefits, and I have personally tried it and I want you to try it too. Okay, so this is what I want you to do. I want you to show your hands while you're talking, so I show a lot of hands. So ऐसा था कि medieval times में people used to hide their weapons. So they used to hide like this. They used to hide it like this, you know, hands behind. And वो एक sign माना जाता था कि you are not friendly. So handshakes were invented to show that, oh, I am here, I am not carrying any weapons. So I am your friend. Let's shake hands. So this is how handshake was invented. So when you show your hands, then you appear more trustworthy. Then you appear like, you know, you are really somebody who anybody would like to look up to. Okay. So or you're really trustworthy and friendly who anybody would like to do business with. So आप अपने hand gestures को जितना हो सके videos में incorporate करो. इतना भी नहीं, but you know, as much as possible that it looks very natural. And of course, the 3-second rule. So first 3 seconds of the video should be very informative. So some people, especially live जब जाते हैं हम Instagram पे, so I have seen some people आते आते they will be like, they'll eat something, they'll drink something. I just wanted to come online and talked about this thing. I just having a very good day, bad day. This is not done. You need to capture people's attention in first 3 seconds. So it's like, very good afternoon. Let's talk about today's topic, which is about how to build confidence on social media. Okay, so 3 seconds may you have to make sure that you're catching their attention with the help of your energy and with the help of what you're trying to say. Instead of saying, hi, I hope you're having a good day, I just wanted to come online and talk about. No, nobody is going to listen to the rest of the story. Okay. Never use slangs and negative comments. Okay. So slangs तो use करने ही नहीं है. अब negativity आती है. हम बहुत टाइम तक हमारे में हमारी upbringing हुई होती है in a very different way. So all of us have, even my household, we have a lot of people who are homophobic. Okay, and we are taught as if homophobia is okay. Lot of people around us are misogynist, and we are taught misogyny is okay. You know, औरतें ऐसी होनी चाहिए, औरतें ऐसी होती है. In fact, sometimes we use feminine terms as slangs, and you know, the conversation can get a little uncomfortable here, but sometimes we say, अच्छा ये तो बिल्कुल you know, हिजड़े की तरह बात करता है, और ये तो बिल्कुल जनानियों की तरह बात. No, we at least in real life तो छोड़ी दो, in on social media, on reels also, if there is any type of misogyny that is coming to your mind, or if there is any type of like homophobia that is coming into your mind, or any type of like racism that is coming into your mind, make sure that you don't show it out on your social media. Because एक बार आपने एक नेगेटिव कमेंट डाली किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान, रेस, किसी चीज के बारे में, जेंडर के बारे में, you will lose all customers from that race and gender. Do you want to do that? We don't want to be somebody who is you know, who is sort of you know, caught in their belief system. We want to be somebody who is inclusive of everyone. हम अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब के वजह से अपने बिजनेस को हर्ट नहीं करेंगे. सो वी विल नेवर यूज स्लैंग्स, never use any type of negative language, or you know, try myself as somebody who's excited to do the business with everyone and accept everyone, basically. Okay, all right. Basically, if जैसे in real life also, in otherwise also, so एक चीज होती है law of reciprocity. When you do something sweet for someone, the other person will automatically reciprocate with doing something sweet for you. So maybe you are doing somebody a favor that is going to come back to you in a lot of ways, by being a successful sort of a thing for your business.
So it can come up to you, and it can be a very big thing also in future. So always be at your best behavior, social media pe bhi or otherwise bhi. If you get an opportunity to help somebody who is your competitor, especially on social media, help them, because you never know, because there is nothing called as competition. इस world में abundance है सबके लिए, and everybody is, has the right, and everybody has the capability to be very successful. Okay, so if you're able to probably share the content and collaborate with them, kya pata in future, that person will do even more, something even more sweet for you, will begin an opportunity. Because it has personally happened with me. So I was participating in a competition which was about speaker ka competition tha wo, best speaker in India. And I shared the content of one of the competitors there, and she got a lot of views because I shared it. So I happened to now have okay, koi aur jeet gaya, and that chapter got over. And abhi very recently, she was invited as a corporate trainer for one of the conferences, and she was sick, she was not able to take it. So imagine who got it. So I mean, I was able to get that, and it was a life changing experience for me, because this was like a pan India training. So I traveled to 7 different cities to give this particular training. So that small, just sharing my competitor's story on my particular story, and collaborating with her actually led to a lot of things. So try and do these favors for other people on Instagram, because it's going to come back to you. Okay, so etiquette क्या होता है? Anybody can tell me in this chat box कि आप etiquette से क्या समझते हैं? Etiquette, just normal, जैसे कि क्या लगता है आपको etiquette क्या हो सकता है? Not social media etiquette, normal etiquette. Behavior, very good. What else? Gesture, rules, behavior, very good. Behave. Okay, all right. Sure. So etiquette basically हमारा एक set of rules and regulations है जो हमारे behavior को guide करता है. So rules and regulations which make you or which make other people comfortable in your presence. So it's about other people. It's a set of rules and regulations that can make you more sophisticated and more classy. So if you are a sophisticated person, if you are a person who other people will look up to, you will have etiquette. ठीक है? और हमारा manners होता है how we interpret etiquette, how we interpret those rules and how we behave. And etiquette जैसे ethics or probably your values. So उसी तरीके से etiquette is just a set of rules, and how we interpret it and how we behave is how we act as sophisticated and enlightened individuals. So social media etiquette है अपने आप को सोशल मीडिया पे इस तरह, और सोशल मीडिया गुड एटिकेट है कि अपने आप को सोशल मीडिया पे इस तरीके से प्रेजेंट करना कि आपके सामने वाले आपके कंटेंट से कुछ पॉजिटिव सीख पाए, कुछ पॉजिटिव फील कर पाए, और कुछ पॉजिटिव एज इन प्रोबेबली इम्बाइब कर पाए, राइट? सो किस तरीके से आप एक गुड सोशल मीडिया एटिकेट होता है? सबसे पहले तो यू हैव टू ऑलवेज आस्क बिफोर टैगिंग द अदर पर्सन. So this is very important rule which we often forget. हम अपनी friends के साथ बाहर जाते हैं, so we take the liberty of tagging everyone, and sometimes it's like we go out with not so good friends also, and we take the liberty of tagging everyone everywhere. So it's not a good etiquette, because not everyone is comfortable sharing their pictures on Instagram. अब बहुत लोग filtered pictures डालते हैं, बहुत सारी filtered picture डालते हैं, और उनको रियल लाइफ में आप पहचान भी नहीं पाओगे कि वो रियल ऐसे दिखते हैं. बट इन योर फोटोज दे विल लुक लाइक रियल पीपल, so they will not be comfortable sharing that version of themselves on social media, right? So you have to always ask before tagging. I know sometimes we feel like चलो इसको expose किया जाए social media पे, but we have to at the end of the day think that what we want to achieve. We want that person's loyalty, or we want the thrill of showing that person off and uska पर्दाफाश करना. So we want that person's loyalty at the end of the day. Okay, then
अगर हम कोई भी चीज को शेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपनी स्टोरीज में, सो ऑलवेज वी हैव टू गिव क्रेडिट्स टू ओरिजिनल क्रिएटर, एंड नॉट जस्ट क्रेडिट्स, वी हैव टू टेक परमिशन. सो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मेरी वीडियोस को पोस्ट कर देते हैं अपने प्रोफाइल में, and they just give me credit नीचे ना, video by Kumari Surbhi, and I'm like, this is not acceptable, because आप मेरे वीडियो को इस तरह, और नीचे कैप्शन में कोई उतना नीचे जाके पढ़ता भी नहीं है honestly, so it does not feel good, and especially if the person has not taken permission, right? So very important that we take permission. We have to never use any type of slang. से तो देख लिया, होमोफोबिक, मिसोजिनिस्ट, अगर कोई न्यूज भी है जो मिसोजिनिस्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल you agree with a court's decision which is not good for women. For example, abortion just got legal in US, right? So sorry, illegal in US. So it was not a very good day for women activists, and of course it's not a good thing for women rights. So आप ये नहीं लिख सकते कि okay, very good because we are pro life. So it's okay if you're pro life, it's okay if you have some beliefs, but always think कि आपका personal profile एक personal profile नहीं है, it's a place where people are going to come and judge, and जब तक लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, they will never do business with you, right? Always think as a leader, और basically आपको ऐसा सोचना है that आपकी grandma Instagram पे है, and if she doesn't approve anything, it should not be something that you should be posting. For example, imagine a professional person, imagine a very big, imagine Elon Musk, okay, your idol. Will you appreciate if Elon Musk is doing drugs and putting it on social media? Right? It will not give very good, and he will lose a lot of followers. He will lose a lot of business. Tesla के shares गिर जाएंगे, right? So no smoking, drinking, clubbing, and posting. I mean, of course, you can smoke, drink, club, whatever you want, but don't post it on social media, because you never know who is watching you and who is actually making notes. कि okay, और बहुत लोग होते हैं ना जो लोग so there always, I'm sure that in a business cycle there are early adapters, you know, जो लोग आपके product और आपके service को immediately खरीद लेते हैं. There are people who are late adapters, who once see that it is proven and then they buy, and then there are product third category of people who are really waiting to see. So जो सबसे late, जो बहुत late purchase करते हैं, सब कुछ परख के, जांच परख के, तो जांचने परखने वाले लोगों की नजर से कोई नहीं बचता. So we have to make sure that we are not posting such pictures on social media, and we are always acting as responsible citizens. And also one more thing, अगर आपने for example you bought something, you bought a BMW, you bought an iPhone 14 Pro Max, or you bought something very expensive, no, don't just click a picture of that and just post it on your social media, Instagram especially, like that. अगर आपको ये दिखाना है कि you bought it from a business income, that is something else. That is something which is, of course, you should do that. You know, treating myself from a business income, of course, you should do that. But अगर आपने, for example, you did it from the father's money, or too much of show off is also something that is not good, because there are many people who are watching you, and they might not feel very good about not having that thing in their life. और हमें at the end of the day अपने आप को ऐसा दिखाना है, the person who is trying to help them achieve that, not a person who has that and is trying to show off, right? Okay, no sort of showing off now. All right, value. So coming to the third pillar of whatever makes us professional in our social media is value. So create content that, okay, बहुत अब दो टाइप के कंटेंट होते हैं. एक, मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी, ओके, इसका ये फीचर है, इसका ये फीचर है, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट are the features of iPhone 14, 1 2 3 4 5 6. And in another video, I'm talking about privacy issues and how
sort of iPhone is helping people achieve more privacy. So, which video do you think is going to be more relatable and is going to trigger buying behavior? First or second? Let me know in the chat box. Second. Himanshu is saying second. Rajesh also second. And Tehmeen as well. So thank you so much. 100% of you believe, I feel that it's the second video that is going to trigger a buying response. So always, we are always going to post content which is trying to help solve a problem about the other person. हम अपने आप को ये नहीं दिखाएंगे that we are trying to sell something. We will show as ourselves as a person who is trying to solve a problem. So I, as an image consultant, I never, if you go and see my profile, I will never talk about the services that I offer straight away. I will only talk about the problems that I'm able to solve. You know, are you someone who is afraid of communication? Are you someone who is afraid of public speaking? Are you somebody who wants to probably look different and feel different? So, you know, this is something for you. So, this is how we present it. And then of course, very important to engage on stories and DMs. And basically, people always buy from advisors and teachers, as we already talked about, rather than persons, people who sell. So, आपके stories में, I'm sure you're already aware that stories trigger a lot of buying behavior. So, if you're able to post more stories in which you take people throughout your day, even if it is suppose a casual story, and you talk about things, and you talk about how this thing has helped you, it's really going to be like, people are going to watch more and more, and people are going to think like, oh, this person is not selling, this person is just talking about their particular experiences. Okay. And then you have to always have a notepad or a planner handy. You have to keep thinking about the things that can add value to your target audience. And basically, always try and recommend good quality products, because kya hota hai na, products, when you sort of recommend it, you make money. And if it is a bad quality product, people will hesitate from buying from you. So try and recommend high quality products only, because in the long run, even if it is expensive, and even if one person buys it, so you will have more sales or more volume out of that. And you will also have like repeat customers, because these people know that what you're recommending is the right thing and the ethical thing, because you're always ethical, because people never want to buy from somebody who is unethical, somebody who is misogynist, somebody who is not a good person. People always want to buy from good people. People want to watch movies of good people, right? People want to do business with good people. People want to be in relationship with good people. Okay. So what is personal branding? Showing yourself as good people. Okay. So keep asking for testimonials. अब जैसे कि आपने एक सेल कर लिया, so what happens is you give so much after sales support. You give so much support, to your customer who is actually trying to or who has actually purchased from you, because after sales बहुत जरूरी है, because that will trigger a person to give more word of mouth to other people, and that is also going to sort of help you with testimonials. So more testimonials you have, the better it is going to be. So testimonials का एक आपका जैसे स्टोरी हाईलाइट्स होता है, उसमें से एक टेस्टिमोनियल हाईलाइट तो होना ही होना चाहिए, because that is how people will actually be more they will sort of prefer you more, or they will trust you more. Okay. So again, what kind of content is good, or what kind of I mean, I'm sure you know, video सबसे अच्छा होता है, but carousels also, because if you go to your normal like explore page, so you will see, for example, इधर रील चल रही है, इधर रील चल रही है, इधर एक रील चल रही है, बीच में इतने सारे carousel posts हैं, right? So carousel posts are also something that is really helpful. And in fact, I have one carousel post in which I'm talking about airport etiquette. And that carousel post has, I would say, 500K views. Just carousel post है normal, उसमें मैंने 5-6 स्लाइडें बनाई है,
और वो कोई ऐसा नहीं है कि it's very sophisticated. It's like a normal piece to camera, like good font, big font, carousel post. So again, it can bring a lot of followers, and it can bring followers ज़्यादा होते हैं. So maybe followers may not mean good business, but followers will always mean that your Instagram is being sort of shown to more and more people, and followers will also mean credibility. Because this person is followed by so many people, I will also follow this person because I'm sure that this person has a lot of credibility, or this person makes sense. Okay. Another thing is, okay, so a lot of people ask me this, how do you stay motivated, or how do you stay motivated to put content every day, or जैसे कि आप trainings भी करते हो, how is this energy coming, how do you stay so motivated to to work on your dreams every day? So to my answer to them would be, I don't. I'm not motivated every day, because even I have very difficult days. And today also, I am back from an international trip. So I was very tired, and I was like very sort of, it was a very difficult day for me, because I had some sort of, there was some trouble with some of the people who were traveling with me with the customs. So again, it was a very difficult day, but I cannot let it come on here, because I am disciplined to make the most of what I'm doing. So discipline is what, you set a goal for yourself, and you are disciplined कि कुछ भी अगर मेरा motivation नहीं भी होगा, so I will stay disciplined to do this. I will stay disciplined enough to do this irrespective of how I'm feeling on that particular day. So for example, जैसे athletes होते हैं, they practice every day. I cannot believe that they are motivated every day to run for 100 miles, or they are motivated every day to work out in the gym for 4 hours. They don't. Motivation nahi aati hai, because our sort of body wants rest, and it keeps asking for more and more rest and more and more food. But it's the mind that needs to be disciplined enough. And once you stay disciplined, once आपने एक rule बना लिया that I will post one reel per day, irrespective of what, and I will be well groomed in that reel, irrespective of what. I will put some sort of probably water or gel in my hair to make it a little good, well groomed, and I will shave. I will not post a video without these things. I will not post video with bad energy and no smile. If that discipline is there, eventually, when a lot of traction starts coming into your videos, you will feel motivated to do it. So ऐसे होता है ना कि just like you start your fitness journey, and when you start gaining muscle, then you start feeling more motivated. पहले दिन से तो बिल्कुल भी नहीं आता है motivation, right? So when it comes to content creation, or when it comes to otherwise also in your life, very important that you make a list of habits that you want to do. जैसे कि you can read books also. Atomic Habits करके है by I'm sure that you've read that book also. Atomic Habits, Power of Habit, and read this book. So these will give you a very good idea. Books by Brian Tracy, they will give you a very good idea, and they will really prime you up for success. So discipline to show up every day is going to help you with everything, right? The motivation doesn't work. And then आपका content pillars होने चाहिए, जैसे कि for example, as a personality development coach, my content pillars are communication, personal grooming, and body language, and probably skincare, hair care. So I post content, so look, feel, behave, and communicate. So this is how my content pillars would look like. So I will post something about how to look good on Tuesday, how to behave good on Wednesday, how to etiquette say related on Wednesday, and how to communicate on Thursday, so on and so forth. And shoot the video. So basically, how I shoot it, I sort of get ready, I put makeup, and sort of groom myself, and I start shooting, shoot. 2 hours I will shoot. So in 2 hours, I will easily make 5 to 10 videos, right? And per day, what I do is I'll just edit and sort of post.
So editing will take like hardly 5 minutes of your time. And another engagement with your followers and stories would take another, let's say, half an hour of your time, right? So 35 minutes per day Instagram, or maybe 1 hour of Instagram. And shooting is just like, for example, 2 hours for 10 days. So that would be in a month, 6 hours of your Instagram content creation, and your 1 hour per day. So 30 plus 6, 36 hours per month you have to give for your Instagram in order to post one reel per day and in order to grow. And I am sure that if you are able to put these strategies in place today, and I'm talking this and I'm giving you a guarantee that you are going to double your income by the end of 2022, and even double your followers for that matter. Okay, and it's going to change your life, and you're going to be so happy that you did something like this, so you started something like this. Okay, so अब क्या होता है कि there is a lot of negativity also that comes on Instagram, and there are trolls who will try to bring you down, and I get them a lot myself as well. And basically trolls का क्या है, they will give you engagement, because the more they will comment hatred, the more Instagram is going to actually pull your video or push your video forward. So always remember that this person who is trying to bring me down, and this person who is trying to troll me is actually giving me engagement before responding. And respond, not react. So if the person is trying to give you feedback, so आप normal एक acknowledge कर लो and say that I understand where you're coming from. I totally get your point of view. That is a fact I cannot deny. These are the things which diffuse the anger of any person who's commenting, and you will win their heart and they will follow you. There have been so many instances when trolls have, sort of spilled a lot of hatred on my videos, and I've handled them with so much of love and grace that they were like, okay, you won me over, and you have earned a follower. Okay, so try to say that and use simple sentences, or as much as possible try to engage with DMs. And some people, अब कोई कोई trolls होते हैं वो बहुत ज़्यादा बकवास करते हैं, so we don't have to entertain that. But if you think that person is genuinely trying to say something, and that person is genuinely giving you a feedback, try and sort of, instead of uh, starting to defend yourself, just acknowledge their point of view first. Okay, so I have an assignment for you. So what I want you to do is, I want you to plan a value based reel as per your niche, and I want you to follow everything that we discussed in the presentation today. I will ask my team to share this presentation with you also via email, so that you can go through it and you can understand कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमने बात की है, list of things. And I want you to keep in mind all these things and make a reel, which is again based on your niche, and tag me and tag Bizgurukul also. I would love to repost them on my stories, and I will also give my feedback generally. If you want to ask me per se that if is there something, Surbhi, that you think that I could work on, or what would be your feedback to my particular story or my particular post, I would love to give that. And yeah, that's it. If in case you want to reach out to me for any kind of like personality development courses also, so I am a soft skills coach, so I can help you improve your personal communication skills also. I can help you improve your personal branding and the way basically you present yourself in real life as well, because not just social media, your real life is a part of your personal branding as well. So how you actually meet and interact with people. If you want to work on your grooming per se, you can always let me know on my personal Instagram or my image consulting Instagram, which is image consulting, and I would love to assist you with the same. So make this reel, and I will love to put it on my stories and give you feedback as well. So let's hear more questions. Let's hear feedback. Let's hear everything. With this, we come to the end of what I have to say. But let me hear questions.
Okay. The only two questions that I can see is voice not clear and volume is low. हम क्वेश्चंस पार्ट पे बिल्कुल बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं सुरभि हम? हाँ जी, हाँ जी। या Just a ओके। second. Okay. Oh, how lovely. Yes. वेल 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 वेल, इट्स मतलब मुझे बहुत मजा आया सच में सेशन के अंदर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे। मैं एक चीज में पार्टिसिपेंट को जरूर बोलना चाहूंगा, लाइक जैसे ना सुरभि यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनको हम सिखाते हैं कि कैसे आपको सोशल मीडिया पे प्रेजेंट होना है, ठीक है? वो बेसिक बेसिक चीजें हमको समझाते हैं। व्हाट आई फील कि जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं कि थोड़े टाइम बाद ना वो पॉइंटर्स हमें कहीं ना कहीं पता होते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो ना फेड हो जाते हैं, उनको हम फॉलो करना बंद कर देते हैं। एंड आई फील जो पॉइंटर्स आपने बताए, अगर किसी को सोशल मीडिया सच में क्लास मेंटेन करनी है, मतलब वो अथॉरिटी मेंटेन करनी है, तो दीज आर द शार्प एजेस। कंटेंट हर कोई बना रहा है, वो बायो हर कोई लिख रहा है, हाइलाइट्स हर कोई क्रिएट कर रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट दीज आर द शार्प एजेस जिसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, और उससे बहुत हाई इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो आई वांट कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो अपना सोशल मीडिया साइड में रखें, सेशन की रिकॉर्डिंग देखें या जो पॉइंटर्स देखें, वो देखें कहाँ कहाँ वो शार्प चीजें मैंने मिस कर दी हैं। हो सकता है किसी ने अपनी बायो में कैलीग्राफी यूज कर रखी हो, डिफरेंट फॉन्ट यूज कर रखा हो, छोटा सा आइकन यूज कर रखा हो, एंड ट्रस्ट मी, छोटी सी चीज बहुत इम्पैक्ट डाल रही है सच में। आपको लग रहा है कि ये तो छोटी सी चीज है, बट इट विल क्रिएट अ हाई इम्पैक्ट जो कस्टमर है। और एक चीज मैंने बहुत फील करी है, सोशल मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा पावर है। अगर आप यूज कर रहे हो और आपको लगता है कि आप फ्यूचर की बड़ी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना चाहते हो, तो कोई होगा जो आपको देख रहा होगा। इट कैन बी अ बिग इन्फ्लुएंसर, इट कैन बी अ बिग, मतलब किसी बिग बड़ी कंपनी का सीईओ हो सकता है जो आपकी प्रोफाइल को देख रहा हो, और वो आपको इन बेसिस पे जज करेगा जो आज पॉइंटर्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट करे गए। थैंक यू सो मच सुरभि, आपने उन शार्प एजेस को बताया। एंड आई वांट जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अगर किसी को अभी कोई डाउट रह गया है कि कैसे प्रेजेंट करना है, कोई भी सेशन रिलेटेड है, कुछ चीज कंफ्यूजन है, क्लियर आउट नहीं हुआ, तो Q&A सेक्शन में आप पुट इन कर सकते हैं क्वेश्चन। एंड सुरभि मैं आपसे पूछता हूँ, आप प्लीज आंसर करते जाइएगा, ओके? Sure. ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है गौरव ने पूछा है कि दोज हु एनरोल्ड नाउ गिव देम स्टेप 1 स्टेप 2 टारगेट। जो अभी लास्ट आई थिंक अभी टारगेट, मतलब जो बताया है, चीजों चीजों के बारे में बताया गया, आई थिंक वही फॉलो करना है आप लोगों को, ठीक है? तो पहले उसे ही, मतलब स्टार्टिंग से जो बायो पहले है, प्रोफाइल पहले, तो वहीं से आप स्टार्ट करें, ओके? आई थिंक कोई अभी हमें, So या your step one target would be to optimize your profile bio, जो आपका look है उस पे पहले आपको first work करना है, and your step two target would be to make a reel and tag me and Bizgurukul. So I would love to have a look and give you a sort of a feedback. बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग जिसने पूछे, रिकॉर्डिंग बिल्कुल अवेलेबल होगा। नेक्स्ट है, मैम कलर थीम वीडियो प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं क्या? पोस्ट और रील्स दोनों कर सकते हैं? पोस्ट और रील्स, सॉरी मैं समझ नहीं पाया हूँ क्वेश्चन यहाँ पे। फाइल बिल्ड कर आप अगर समझ पा रहे हो तो प्लीज आंसर करना सुरभि। I कलर, think क्या? मेरे हिसाब से they are asking about color theory. मतलब जो मैंने बातें करी हैं कि कैसे बिजनेसेस और ब्रांड्स अपने कलर्स यूज करते हैं, तो आपको जो लगता है पर्सनली, जैसे कि अगर आपको लगता है कि ब्लू आपको ट्रस्टवर्दी बनना है, सो आप ब्लू बैकग्राउंड के ब्लू कैरोसल्स यूज करो विथ वाइट सॉर्ट ऑफ इंक, ब्लू बैकग्राउंड एंड सॉर्ट ऑफ, अगर आप वीडियोस भी शूट कर रहे हो सो प्रॉब्ली आप पीछे एक ब्लू बैकग्राउंड लगा सकते हो। तो पोस्ट और रील्स एंड एवरीथिंग यू कैन मेक इट मोर ब्लू, एंड इवन व्हेन इट कम्स टू योर फॉर एग्जांपल योर ओवरऑल लुक, जैसे कि बीच बीच में लोग कुछ कोट्स डालते हैं अपने प्रोफाइल को थोड़ा और एस्थेटिक और वेल राउंडेड बनाने के लिए, तो उसमें भी आप एक ब्लू और ब्लू इंक और या फिर एक वाइट इंक ऑन ब्लू बैकग्राउंड यूज कर सकते हो to make it like more personal branding से related. You can take more examples and inspiration from Bizgurukul profile. So they have used their orange color very well. So आप ये देख सकते हो कि how exactly can I also do that? ट्रू। एंड ट्रस्ट मी गाइस कि ये ना ब्रांड बिल्डिंग की पहचान होती है। इफ यू आर मेकिंग अ पर्सनल ब्रांड ना, तो ये आपको मैंडेटरी है फॉलो करना इन चीजों के लिए। एक चीज मैं चाहूंगा आप प्लीज जरूर कवर करो, मुझे एक्चुअली मैं अपनी ऑडियंस को देखता हूँ तो वहां पर मुझे कहीं ना कभी कभी लैक लगता है, दैट इज आपने बताया कि फोटो के अंदर जो पिक्चर होती है जो हम यूज करते हैं डीपी के लिए, तो उसमें तो आपने अटायर बताया, बट लेकिन जो वीडियोज वो क्रिएट करते हैं
वुमेन्स के लिए और मेंस के लिए क्या अटायर मोस्टली फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग देयर नीश, वो आप जरूर, आई नो इट्स अ पार्ट ऑफ द इमेज मेक ओवर, ठीक है, Yes, बट but हाँ, I'll cover that. या Mm-hmm. ओके, So, for example, if you're an affiliate marketer, आपका product क्या है? If it is a consulting product, I am not understanding कि exactly क्या products होते हैं. आई मैं विल टेल यू, आई generally विल टेल यू, about एक्चुअली हमारे डिजिटल okay, कोर्सेज हैं लाइक सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, तो ऐसे मल्टीपल हमारे पे डिजिटल कोर्सेज हैं जो मार्केट में सेल आउट okay, करते हैं, एंड आर यूएसपी इज कि okay, हम वो कोर्सेज सेल आउट करते हैं इसको लोग मोनेटाइज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई पीपल okay, सेल दिस यूएसपी कि आप इस स्किल को सीख के ये रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो, दैट्स द यूएसपी ऑफ। okay. Then it is very important for you to be informal, क्योंकि आप हम्म, कोई एक क्या ये कोई कैजुअल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक पर्सनल डेवलपमेंट एजुकेशनल कंटेंट प्रोडक्ट है. सो एजुकेशनल प्रोडक्ट के लिए यू हैव टू बी इनफॉर्मल. यू नो आई विल सजेस्ट कि आप एक ब्लेजर परचेज करो फॉर एग्जांपल, यू नो प्रोबेबली इन ब्लैक कलर, क्योंकि ब्लैक कलर सबसे ज्यादा यू नो जाता है हर एक आउटफिट के साथ. एंड जैसे कि मैंने बोला, ब्लैक विथ एनी काइंड ऑफ वाइट or probably a red will look good. So red tie, if possible, tie is not mandatory. Even the scarf that I'm wearing right now, it looks very ट्रू, professional and formal on anything. Even if suppose you don't have a very good shirt or anything, so you probably a top only you're wearing with a proper blazer and a scarf for girls. For boys, nice shorts, blazers, मतलब जितना formal हो पाओ उतना better है आपके लिए. मतलब बिकॉज पीपल आर यू नो गोइंग टू सी दिस, बिकॉज आई एम श्योर अगर आप एक स्कूल प्रिंसिपल के बारे में सोचते हो तो व्हाट डू यू इमेजिन दैट पर्सन वुड बी वेयरिंग, और यू नो अ पर्सन हु इज द CEO ऑफ एजुकेशनल कॉर्पोरेशंस, व्हाट विल दैट पर्सन बी वेयरिंग. बट अगर वो एक कंप्यूटर कंपनी का CEO है तो दैट पर्सन विल वेयर समथिंग एल्स लाइक अ टर्टल नेक, 16 jobs. But for you know something related to education, it has to be formals. आई थिंक इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी ऑफ योर एंड योर प्रोफेशन, एक उसका Yes, कॉम्बिनेशन मिला के हम अपना को प्रेजेंट। yes. एग्जैक्टली. तो अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको अटेंशन ग्रैब करना पसंद है, सो प्रोबेबली ऑरेंज और रेड शर्ट विथ ब्लैक ब्लेजर. इफ यू हम्म, लाइक टू ब्लेंड इन, व्हाइट शर्ट, ओके, समथिंग लाइक दैट. ठीक है। एक यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि लाइक जो सबटाइटल हम ऐड करते हैं कि अगर वो सबटाइटल जरूर वो भी ब्रांड कलर में हमारा होना चाहिए या फिर इट विल अफेक्ट, ऐसा कुछ सो मैंडेटरी नहीं? क्या होता है दैट इट शुड बी रीडेबल. सो अगर आपका ब्रांड कलर है ब्लू, और मतलब वो उस कंटेंट में जब आप वीडियोस पोस्ट करते तो ब्लू और इवन विद ऑरेंज दिस प्रॉब्लम हैपेंस दैट वो हम्म, उतना रीडेबल नहीं होता है. तो हम्म, कैप्शन में फर्स्ट प्रायोरिटी इज रीडेबिलिटी, अच्छे से दिखना चाहिए. सेकंड प्रायोरिटी इज इफ यू कैन मेक इट योर कलर, इट्स फाइन. बट इफ आपके ब्रांड कलर में वो दिख ही नहीं रहा है जो टेक्स्ट लिखा है, सो इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट. सो अगर दोनों पॉसिबल है तो वेल एंड गुड. Otherwise, your focus should be black and white and readable, more text which is readable. ठीक है। यहाँ पर आकाश का क्वेश्चन है, इफ वी गो लाइव देन आल्सो वी शुड बी इन फॉर्मल ड्रेस लाइव। Yes, Akash. Yes, yes, totally. Why? Because you are always representing yourself as a brand. ठीक है. हम्म, So I'll give you a very small example. मैं बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ. The moment I start talking in slangs, you know, I start talking in bad language, I start too tadak, it will, you know, you will think that यही आपकी reality है, यही इसकी reality है. Okay, हम्म, and she is putting up a show, and this is not her reality. Her reality is the slang wala behavior. So the moment you dilute your personal brand, that is the moment people start thinking that this is your reality and I will never trust this person. So you always have to be a certain way. जैसे कि अगर मैं इमेज कंसल्टेंट हूँ, जिस दिन मैंने एक फटी पुरानी एज इन ड्रेस पहन के अपनी ट्रेनिंग ली, that is the very moment, even if I come on live, people are like, oh, this is a reality, no, 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 reject. So you have to be informal. ट्रू, ओके। कैप्शन के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? लाइक कैप्शंस में भी मतलब कुछ एटिकेट्स का हम फॉलो, लाइक कोई बहुत बड़ा कैप्शंस भी लिख देते हैं, लास्ट लास्ट जाता है, तो अकॉर्डिंग टू यू कैप्शन अगर हम लिख रहे हैं तो क्या क्या फॉलो करना चाहिए हमें उसके अंदर, या Okay,
सो कैप्शन भी सेम एज एन रीडेबल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बहुत लोग कैलीग्राफी डाल देते हैं कैप्शन में. So people are not able to understand it properly. So etiquette is again, as I said, ki, making other people's life easy. So make sure that you are able to write it in the very font जो Instagram का font है उसमें लिखेंगे, कोई ज़्यादा smartness नहीं. And we are also putting couple of contact details, website details. जितना भी हमें ऐसा होता है ना कि मतलब engaging caption लिखना है. For example, instead of just talking about the product, we are talking about how the product is solving the problem. For example, That's very are you important. facing privacy issues? If yes, you can invest in this privacy software. And if you want to know more, you can contact me on this. Who am I? I am and I'm a securities consultant, and this is my contact details. So everything that you do should have a sort of a goal. So even if you're writing a caption, so it should, if a person is reading, then that should direct the person either to contact you or to visit your website. Okay. So yeah. And one thing I want to add on कि कई बार मैंने लोगों के grammatical mistakes देखी हैं, तो please बहुत ध्यान रखें. yes, exactly, very important. अगर for example हमें short नहीं है कि हम जो grammatical जो लिख रहे हैं, is that grammatically correct or not? So there is a website called as grammarly.com. So उसमें you can go and you can just copy that para that you have written and go and check, run a grammar check, paste it there. तो वो वहां पे आपके grammatical errors को सही करके आपको वापस दे देंगे. So in that way you will be able to write any type of correct grammatical error free captions. And grammatical error करने से भी एक वो same image आता है कि oh, this is the reality. Actually, if this person, and sadly it's a sad truth that हम बहुत लोग आजकल सब लोगों को English language से judge करते हैं. And they judge that if a person is speaking so well, if a person is able to talk so well without any grammatical errors, that means this person is very intelligent. That means this person is this person knows what they're doing in their life, right? So sad truth, but we have to, we can't do anything about it. So very important that we sort of follow this even in DMs, not just otherwise. बिल्कुल. डन. थैंक यू सुरभि, थैंक यू सो मच. बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखा, एंड वी होप कि इन फ्यूचर भी हम और सेशंस करें. और मुझे लगता है कि अभी बकेट में बहुत सारी चीजें हैं आपके पास दैट वी कैन लर्न फ्रॉम यू, एंड इन फ्यूचर हम और सेशन करेंगे. आई वांट कि एवरीबॉडी, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, वो चैट सेक्शन में जरूर बताएं कि आज का सेशन उन लोगों को कैसे लगा. टाइप इन द चैट बॉक्स फास्ट प्लीज. और अगर नहीं बता पाते तो you can always write on a scale of 1 to 10, how would you like to rate my training? कल काफी 1 लोग to तारीफ 10. करें. अमेजिंग, Aw, सुपर, वन ऑफ द बेस्ट सेशन thank एवर. you. वाओ, लवली, वेरी इंफॉर्मेटिव, Thank अमेजिंग. you. 10 plus. Thank you. Best 10. Thank you so much. It's really, really sweet of you. और आप लोग ये बताना चाहेंगे, what is that one part of the training which you like the best? What is that one thing that you really, really found very informative? And yeah, very cool and informative. 10. Okay, so आग लगा दी, very good. But I want to know, what is it, that one thing that you really, really liked in today's session? Way of presenting Blending yourself. yourself. Values. Values. Good. Perfect. एंड जरूर वो मेंशन जरूर करें जो आप अपने प्रोफाइल के अंदर चेंज करने वाले बाय अटेंडिंग दिस सेशन. वो very जरूर good बताओ. idea. या Very good idea. Image. इमेज. तो इमेज में क्या इमेज? प्रोफाइल पिक्चर वाला इमेज या वो वाला फॉन्ट? ओके, फॉन्ट. somebody is changing font, somebody is changing profile picture. Very nice. I'm so proud of all of you. It's so good to have amazing everything. all. Thank you. Vani going to add emojis, but use professional ones only. मतलब उसका ध्यान रखना. Yes. Totally. Okay. Done. Okay. Thank you everybody. Thank you, So, Surbhi, for the anything. I am so sorry. One more thing. I wanted a picture for my definitely for my memories. Yeah. So if you can click, if are you using a laptop? मैंने अपना laptop बंद करा. So I'm using a maybe laptop. we can all yeah. So maybe if some of us can switch on our cameras and sort of pose like this.
ओके, मैं यार एक हाथ से क्लिक कर लेता हूँ. हाँ, thank I can you. do that. Yeah. Video, photo. A photo or a video, both will be amazing Done, done, done. if I'm not asking too much. मुझे लैपटॉप के पीछे का Please, मैस दिख रहा है. no issues. I will crop that. Yeah. I hope everyone is posing. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you for your hosting. Also, very sweet of you. You have done it so well, and I still don't know your name. My name is Paras Saxena. Actually, I'm. Thank you, Paras. An Yeah. absolute pleasure to know you in person. And it's just so amazing how you're doing it. All the best and congratulations. Thank you so much, everybody, for tuning in. And bye bye. Bye. Bye bye everyone. Take care. And Bye. actually एक चीज मैं लास्ट में जरूर कहता हूँ कि it's always हाँ. 1% strategy and 99% execution. Yes. No matter what, कितना भी ज्यादा ज्ञान पापू लो, अगर आपको रिजल्ट देखना है, इम्पैक्ट देना, then you have to execute those things. और बिज गुरुकुल हमेशा आप लोगों को सिखाता रहेगा, because we train, we educate, we inspire. We are Biz Gurukul. Bye bye Thank everybody. you, Bizgurukul. Bye. Thank you. Bye.